we were doing change of trim due to change of density, and we were on case number 1, when a vessel goes from salt water to river water. So we are talking about a case when a vessel is going from Chennai and she's moving to Haldia. Chennai being salt water and Haldia being river water. So therefore, this is water line number 1, WL, and this is salt water. And this is the original midship line. And originally, the B is below the G, and the vessel is in stable equilibrium. So write down, let W be the displacement of the vessel. Let W be the displacement of the vessel. Let golf be the COG of the vessel. Let golf be the COG of the vessel. Let Bravo be the COB in salt water. Let Bravo be the COB in salt water. Let rho S be the density in seawater. Let rho S be the density seawater. Let Bravo 1 be the new COB. Let Bravo 1 be the new COB in river water. Let rho R be the density river water. Let rho R be the density in river water. Therefore, so let VR
be the underwater volume in river water. Let Vs be the underwater volume in seawater. Therefore, Vs is equal to W upon rho s. VR That W is is underwater volume. equal to W is displacement. Displacement. W को हमने सबसे पहली लाइन लिखी थी ना, डिस्प्लेसमेंट. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, Vs is equal to W upon rho s. VR is equal to W upon rho r. यहां तक किसी को कोई डाउट? Anybody has any No, doubt? sir. क्लियर है बिल्कुल एकदम? Yes, sir. Okay. Therefore, more volume minus less volume. VR minus Vs is equal to W upon rho r minus W upon rho s. Therefore, V is change in underwater volume. Small v is change in underwater volume is equal to W बाहर ब्रैकेट में 1 upon rho r minus 1 upon rho s. यहां तक any doubt? No, sir. Anybody else? All clear? All clear, sir. All clear. Okay. सर ये आपने रिवर माइनस सॉल्ट किया है बिकॉज क्योंकि हमारी जो रिवर की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा अंडर वाटर इसलिए ना. That's right. More volume minus less volume. हाँ यस सर क्योंकि रिवर की ज्यादा होगी ड्राफ्ट ज्यादा हो जाएगा. बिकॉज जब मैं चेन्नई से हल्दिया आऊंगा तो मेरा जहाज जो है बॉडीली सिंक करेगा इसलिए. करेक्ट. यस सर ठीक है. So is equal to small v is equal to W into rho s minus rho r upon rho s rho r. Is this okay with us? Is this okay Yes, with sir. everyone? Clear. Yes, sir. Clear. Yes, Okay. sir. Okay. So now write down. Originally, golf
and Bravo. Originally, Golf and Bravo are in one vertical line, and vessel is in stable equilibrium. And vessel is in stable equilibrium when she is floating at even keel in salt water. When she moves to river water, she faces a mean sinkage, leading to an increase in underwater volume. The increase in underwater volume aft is more than the increase in underwater volume forward. The increase in underwater volume aft is more than the increase in underwater volume forward. This is so because the ship is more wide-bodied aft. The ship is more wide-bodied aft than forward. The ship is more wide-bodied aft than forward. More wide-bodied aft than forward. As a result, the new COB bracket Bravo 1 shifts aft of and higher than Bravo. Shifts aft of and higher than Bravo. The force of buoyancy equal to W now acts vertically upward through Bravo 1, while the W acts vertically downward through Golf. सर ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दो सर. The force of buoyancy W acts vertically upward
through Bravo 1 while W acts vertically downward through Golf. सर क्या कहा? while force W while the force W, that is the weight, the displacement, is still acting downward through the center of gravity through Golf. So एक W Golf के through downward act कर रहा है, एक W Bravo 1 के through upward act कर रहा है. Then only will be down by head. Correct. Basically एक W Golf के through downward act कर रहा है, एक ऐसे. So ये एक टर्निंग कपल बना रहा है. Thus, a turning couple gets formed. Thus, a turning couple gets formed in the form of a trimming moment. Which tends to trim the vessel सिमर, वो तेरे ड्राइंग बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं by head. अच्छा, काम तो हुआ नहीं फिर. मेरे सारे लेटर रह गए अभी, सारे लेटर रह गए हैं. मेरा काम तो अभी हुआ ही नहीं. मेरी सारी मेल पड़ी 15 भी. Which tends to trim the vessel by head. This process continues Till we come in a stable equilibrium. till Bravo 2 and Golf become in one vertical line. And vessel is again in stable equilibrium. Hence, vessel will be down by head. Hence, vessel will be trimmed by head. हाँ जी, यहाँ तक anybody has any doubt? No, sir. Okay. So let's write down the numerical now. The formula now. So हमने ये लिख लिया था. सर एक बार ये आपके मॉडल पे समझा देंगे शिप वाले पे. So basically ये वेसल है, ये ऐसे इवन कील में फ्लोट कर रहा है जी. एक डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है. हाँ जी. थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. एंड
साइमल्टेनियसली एक फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट कर रहा है थ्रू ब्रावो 1। ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी ब्रावो 1 के थ्रू एक्ट कर रहा है और ये गोल्फ के थ्रू नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट दिस विल फॉर्म अ टर्निंग कपल। हाँ जी, लीवर बना देगा। तो वो ये लीवर बना के और इसको ऐसे ट्रिम कर देगा बाय टू गो डाउन बाय हेड। अब जैसे जैसे ये डाउन बाय हेड जाना शुरू होगा तो ये ब्रावो 1 आगे ट्रैवल करने लग जाएगा। हाँ। एंड जब ब्रावो 2 और गोल्फ एक वर्टिकल लाइन में आ जाएगा तो ये रुक जाएगा। तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। ब्रावो 2 और गोल्फ एक ही लाइन में है? हाँ, वर्टिकल लाइन में। अच्छा। तो उस वक्त ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, ये रुक गया। वेसल विल बी ट्रिम्ड बाय हेड। हेड। इज दैट ओके? ठीक है सर। ओके, सो ट्रिमिंग मोमेंट। सो बेसिकली सर जो हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स है वो एक ही जगह से नहीं लग रहा है, इसलिए ट्रिम हो जाएगा जहाज। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ठीक है। बिल्कुल ठीक। बिकॉज चेन्नई में बोथ अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स एक ही वर्टिकल लाइन के थ्रू एक्ट कर रहा था। हाँ जी। गोल्फ एंड ब्रावो एक वर्टिकल लाइन में थे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थे। हाँ। अब जब हल्दिया पहुंच गया तो ये अनस्टेबल हो गया। अब इसको स्टेबल बनना है जहाज को, तो अपने आप ही बनेगा वो स्टेबल। हाँ। सो दिस इज व्हाट द शिप इज डूइंग ऑन इट्स ओन। ठीक है। So trimming moment will be equal W into BB1. This will be by head. By another formula, we have BB1 equals small v into FB upon VR. By another formula, we have BB1 equals small v into FB upon VR, where FB is equal to LCB difference LCF, where FB equals LCB difference LCF. सर ये नहीं समझ आया। सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये वाला Trimming moment is W into. Till trimming moment. This is a derivation of this formula. Is not in the syllabus. The trimming moment is W into BB1. Now there is another formula which is called as a Moseley's formula. That formula's derivation is not in this, which basically gives us the BB1 distance. So BB1 is equal to small v, the change in underwater volume, into FB upon VR, where FB is nothing but LCB minus LCF, the difference of the two. अभी मैंने कहीं LCF को डाला नहीं है, अभी मैं डालूंगा, अभी रहने दे रहा हूं मैं, ऐसे कैसे ही. Let LCF be anywhere.
So इस फॉर्मूले को मैं इधर डालता हूं. So trimming moment is equal to W into small v into FB. हाँ, सर ये आपकी वीडियो बहुत अटक रही है, आवाज भी ब्रेक हो रही है और वीडियो ब्लर है बहुत ज्यादा. Yes, sir. It's same for me. So trimming moment, this is trimming moment. This is equal to W into BB1. I am putting this formula into this equation. So trimming moment is equal to W into small v into FB upon VR. यहाँ तक okay है? Sir, FB नहीं समझ आया sir. That from where this FB came? FB is trimming moment, sir. No. FB is the longitudinal distance between the center of buoyancy, original, and the center of rotation. Okay. Longitudinal center of buoyancy से longitudinal center of flotation तक. ये आप perpendicular है, ये forward perpendicular है. So LCB is the distance from our perpendicular to the center of buoyancy. Are you with me? Yes, sir. Clear. Sir, sorry, LCP is the distance from half perpendicular to center of buoyancy. Correct. LCF is the distance from half perpendicular to center of rotation. For the time being, let the center of rotation be anywhere. I am not putting the value anywhere as yet. So FB will be the distance between B and F. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is that okay? So putting the value of small v in this formula, trimming moment will be W into W bracket open rho S minus rho R upon rho S rho R into FB upon VR. Is this okay with everyone? Is this okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, FB sir. को expand किया. मैंने स्मॉल v को एक्सपेंड किया और इस फॉर्मूले में डाल दिया स्मॉल v को. ये स्मॉल v मैंने निकाला था ओरिजिनल. Okay, sir. Okay, sir. इस स्मॉल v को इस फॉर्मूले में डाल. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है मैंने क्या किया है? Is that okay with everyone? Yes, sir. It Yes, is okay. clear. Yes, sir. Clear. Okay. सर एक बार पढ़ के बता देंगे आपने ये जो W लिखा है फॉर्मूला. हाँ. W into W bracket open rho S minus rho R upon rho S rho R bracket close into FB upon VR. ठीक है सर, थैंक यू. Okay. W upon rho R is equal to VR. So VR and VR cancels. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. So this is equal to W into FB bracket open rho S minus rho R upon rho S
Is this okay with everyone? Yes, sir. Sir, this Yes, is sir, clear. W into FB into rho S minus rho R upon rho S. आगे तो कुछ नहीं है ना सर? अच्छा वो ऊपर का है, ठीक सर. आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. और तो वी आर कट गया था, वो न्यूमरेटर का वी आर और डिनोमिनेटर का वी आर कट गया था. Yes sir. Okay. So change in trim TC. सर एक बार वो दोबारा बता दीजिए वीआर जो कट गया था. अरे बाप रे. तो यहाँ से दिख W नहीं रहा अपॉन रो आर. क्या दिख नहीं रहा है आप लोगों को क्या? सर, वो इसे शायद थोड़ा सा कंजेस्टेड जैसा हो गया ना, इसलिए शायद दिखा नहीं सही से. अच्छा. W अपॉन रो आर इज इक्वल टू वी आर. अपॉन रो आर इज इक्वल टू वी आर को कैंसिल कर दिया मैंने. ओके ओके सर, थैंक यू सर. So moment is equal to W into FP, bracket open, rho S minus rho R upon rho S, bracket close. So TC, change in trim, is equal to trimming moment upon MCTC. So TC is equal to W into FB upon MCTC, bracket open, rho S minus rho R upon rho S. Is this formula okay with everyone? Yes sir. Yes, sir. By is this okay with everyone? सर ये तो समझ Yes, आ sir. गया कि आपने वो ट्रिमिंग मोमेंट की वैल्यू डाल दी, लेकिन ये चेंज इन ट्रिम इज इक्वल टू ट्रिमिंग मोमेंट बाय एमसीटीसी, ये कहीं से आया है सर? ये फॉर्मूला है आपका सेकंड मिनट्स का है. ट्रिम चेंज इन ट्रिम इज ट्रिमिंग मोमेंट अपॉन एमसीटीसी. ठीक है सर. ये आपका सेकंड मिनट का फॉर्मूला है. ठीक है सर. सो ट्रिमिंग मोमेंट ये थी, हाँ ठीक है, वो तो समझ आ उसको गया, डाल डिवाइड कर दिया. दिया एमसीटीसी से. हाँ ठीक है सर. यूनिट्स चेक करते हैं. W is tons, FB is meter. सर फिर से दिखाई नहीं दे रहा सर, ब्लर आ रहा है बहुत सर. ब्लर आ रहा है सर धुंधले हो गए फिर से. How is it now? Still blurred? Okay, sir. अभी Sir, सही हो now गया. okay. बुक का पेज ऊपर है सर थोड़ा. अच्छा ओके. अभी ठीक है. यस सर, यस सर. ओके. टीसी, अब मैं इसके यूनिट्स डाल रहा हूं. W इज टन, FB इज मीटर. नीचे में मोमेंट टू चेंज ट्रिम TM बाय 1 सेंटीमीटर, ब्रैकेट ओपन, टन्स पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टन्स पर मीटर क्यूब. टन्स पर मीटर क्यूब cancels. Ton meter cancels. Centimeter goes on top. So unit of TC
will be centimeter. Is this okay with everyone? सर ये MCTC का क्या लिखा है? टन्स मीटर पर सेंटीमीटर. Correct. ये टन्स It's- मीटर क्यूब है ना सर? टन्स मीटर क्यूब. और density is tons per meter cube. यस सर. So ये दोनों कैंसिल हो गए. टन मीटर कैंसिल हो गए. सेंटीमीटर Yes. ऊपर चला गया. So units of TC will be in centimeters. Okay sir. So is this okay with everyone? Yes, sir. So basically मेरे TC का फॉर्मूला मेरे को मिल गया है. That is W into FB upon MCTC, rho S minus rho R upon rho S. And TC's unit is going to be in centimeter. Agreed? Yes sir. Okay. Yes, sir. Another word. जब भी चेन्नई से किया जाएगा, I will go down by head. Yes, sir. Is that Karan okay? Whenever I go from Chennai to Haldia, my vessel will have a trimming movement which will be by head. The trimming moment is going to be by head. And the quantity of that TC is going to be so much. So TA will be equal to TC into LCF upon LBP. Change in trim aft will be equal to total change in trim into LCF upon LBP. Again from your second mates. TF will be equal to TC minus TA. Yes, sir. ये second में था. Okay. So therefore, I make a drafts table, forward, aft, initial drafts, whatever are my initial drafts there, which are given to me. There will be a mean sinkage plus S, which will be a sinkage, which my vessel will go bodily downward. Then a certain TF and TA will happen. TF आगे लगेगा, TA पीछे लगेगा. TF add होगा sir, TA minus होगा ना? आगे में TF ऐड होगा और पीछे में minus होगा. And I will get my final draft forward
and I'll get my final draft after. And this will be my final drafts. Any doubts so far? सर ये एक बार ये TF इज इक्वल टू TC माइनस TA के बाद बता देंगे क्या किया है सर? ये ड्राफ्ट का टेबल बनाया, फॉरवर्ड एंड आफ्ट लिखा, ठीक है सर, जो भी इनिशियल ड्राफ्ट क्वेश्चन में दिए वो लिखे, ठीक है मीन सर, सिंकेज प्लस एस दोनों जगह ऐड होगा। बिकॉज मेरा बाव नीचे जा रहा है तो हाँ टीएफ का साइन प्लस और ठीक टीए है का साइन माइनस, और फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड और फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट आ जाए। ठीक है सर ये एक बार फिर से बताइएगा जो अभी आपने सर। बताया। मीन सिंकेज कहाँ से आया सर इसमें? मीन सिंकेज कहाँ से आया? मैं जब चेन्नई से हल्दिया पहुंचा हाँ सर, तो मेरा जहाज कुछ बॉर्डरली डाउन जाएगा। हाँ सर, हाँ सो वो जो बॉर्डरली डाउनवर्ड जाएगा मेरा जहाज, हाँ वो मेरी मीन सिंकेज होगी, हाँ सर, या जिसको मैं मीन चेंज इन ड्राफ्ट भी कह सकता हूँ, हाँ सर, जिसको हम फ्रेश वाटर अलाउंस या डॉक वाटर अलाउंस भी कहते हैं। हाँ सर, सो वो मेरी मीन सिंकेज है। ठीक है सर। सो ये है पूरी राम कहानी। ठीक है, इज दिस ओके? यस सर एक डाउट था, यस सर। एफबी का मामला है, हाँ जी, एफबी इज इक्वल टू एलसीबी और एलसीएफ का जो डिफरेंस है, उसमें एलसीबी हम लोग इनिशियल जो बी है वो ले रहे हैं, दैट्स राइट। बट अगर मतलब बेसिकली फाइनल ये इसीलिए कर रहे हैं जो B2 भी जो आ रहा है वो भी पहले इनिशियल वाले की पोजीशन में आ रहा है, बस हायर आ रहा है, बट लॉन्जिट्यूडिनल डिस्टेंस। करेक्ट, फाइनल कंडीशन में। ठीक, ओके Sir, हाँ जी, that means from this we figured out like whenever we'll go from higher density waters to relatively lower density waters, our trimming moment is gonna be by head, and otherwise for lower to higher, like lower to higher trimming moment will be by stern, right? दैट्स राइट, Okay. दैट्स राइट। This is case number 1. What I've just done with you is case number 1 now. ठीक है?